Hello guys, welcome back to my YouTube channel, and today I'm going to show you a quick get ready with me video makeup tutorial. And आज मैं जा रही हूँ बाहर घूमने, and if you want to see where all I go and explore, तो आज का vlog भी आपको दिखेगा मेरे दूसरे चैनल पे, that is शेफाली महंगी vlog, so do check it out. सो लेट्स स्टार्ट विद द बेस मेकअप. मैं अप्लाई करूँगी फाउंडेशन ऑन सर्टन एरियाज ऑफ माई फेस वेयर आई थिंक कि ज़्यादा डार्कनेस है, एंड आई विल क्विकली ब्लेंड इट ऑल यूजिंग अ ब्यूटी ब्लेंडर. You can literally see how flawless my makeup base looks, and never forget to blend your foundation on your neck as well. And now I'm going to apply a very light layer of compact on my face to set everything really nicely. सो आई क्विकली फिल इन माई आईब्रोज ताकि अपने फेस को एक स्ट्रक्चर मिल जाए. एंड देयर वॉज अ टाइम व्हेन आई यूज्ड टू इग्नोर डूइंग माई आईब्रोज, बट yes, it is very important. Now lightly I'm going to apply blush on my face and it looks so beautiful. एंड यहाँ पर मैं मोस्टली प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ दैट आर पाउडर बेस. सो या इट गिव्स मैट फिनिश एंड आई जस्ट लव मैट फिनिश. सो गाइज़, यहाँ पर मैं अपने आई मेकअप में सिंपली एक ट्रांजिशन पिंक कलर यूज़ किया. नाउ आई एम enhancing my crease area and lightly dabbing a very light shimmer shade, and that is all I do for my daytime glam looks. So guys, that is it I do for my daytime glam look, and you can see how gorgeous my eye makeup looks. And yes, I told you कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है matte look, but yes, I apply a bit of highlighter when I am going out or on any special occasion, function, शादी. So yeah, it instantly gives another edge to your makeup. Next मैं जल्दी से apply करूँगी mascara. I'll curl my lashes before that, and yes, you can instantly see a lot of difference. So lastly, I'm applying a very beautiful mauve shade lipstick, and this is just beautiful. And last but not the least, I'll set my face makeup using a setting spray. ये बहुत important step है, don't ever forget that. Or you can see how beautiful and soft glam look I created, and I'm totally in love with this look. I am totally obsessed with this look. And guys, if you really enjoyed this short tutorial, do let me know if you try this look. And thank you so much for watching my video. I'll see you in my next one. Bye.